Hello, you're watching Hornbill TV's Morning Bells Bulletin. I'm Naomi Kikon and here are the news for this hour. A special investigation team of the Assam police raided the residence of Shyamkanu Mahanda, the organizer of the Northeast India Festival in Singapore on Thursday, as part of the investigation into the death of singer Zubin Garg. The raid also targeted the homes of the singer's manager and sound recorders. This action follows Chief Minister Himanta Biswa Sarma's directive to form the SIT to investigate Garg's death, with the possibility of handing the case to the CBI if the police probe is not satisfactory. Delhi Police Crime Branch has arrested 5 persons, including 3 directors of the Indian Institute of Psychometry (IIB) in connection with the ITBP Constable exam leak case of 2021, according to a statement on Thursday. The 3 directors, Amitav Roy, Supendu Kumar Paul and Jaydeep Goswami, were arrested from Kolkata, West Bengal, and 2 other people, a consultant and a printer, were arrested from Delhi. The investigation in the case was launched after an FIR was registered on a complaint filed by Kushal Kumar, Commandant Recruitment ITBP, New Delhi. However, prior to the start of the examination, the question paper was circulated via WhatsApp and was also received by some other senior officers of the ITBP. After the exam commenced, the WhatsApp version of the paper was compared with the actual question paper and it was confirmed that they were identical. Activist Sonam Wangchuk on Thursday responded to a Central Bureau of Investigation inquiry into alleged violations of the Foreign Contribution Regulation Act by his organization, stating that it did not seek foreign funding because it had no intention of backing from foreign countries. Wangchuk's comments followed the CBI probe into his organization over the alleged violation of the Foreign Contribution Regulation Act. Wangchuk clarified the nature of the funds, emphasizing that they were not foreign donations but fees for services rendered. He further explained that the organization had received fees from foreign entities in exchange for sharing knowledge about their innovative projects. Wangchuk also confirmed that his organization was under scrutiny from the Income Tax Department, with a summons issued in relation to the foreign transactions. Earlier, the Home Ministry pinned the blame for Wednesday's violent protests in Leh over the implementation of the 6th schedule on Wangchuk. उसके ठीक बाद अगले दिन आपके खिलाफ सीबीआई जांच जी नहीं सीबीआई जांच अभी नहीं हुई। ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की जमीन वापस ले जा रहे हैं ऐसा नोटिस आया। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, सीबीआई की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो सीबीआई के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। मगर 2000 लेकिन आपने पैसे तो लिए। हाँ, अब देखिए वो क्या पैसा है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का सपना होगा और जो ये यूनिवर्सिटी करने में काबिल होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा कि उसका ज्ञान यानी कि भारत का ज्ञान विदेशों में निर्यात हो। तो हमारे जो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स है जो हमने लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बनाए,
वो अफगानिस्तान में ले जाना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने इसके लिए हमें फीस अदा की। उसी तरह हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली के एक संस्था चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट्स में प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमें ज्ञान की दक्षिणा, फीस अदा की। वो फीस बाज़ाब्ता टैक्स के साथ है। आप जब चंदा लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये सर्विस एग्रीमेंट है जो आपकी एक क्या कहते हैं, इज्जतदार नॉलेज पार्टनर किसी और को नॉलेज सप्लाई करता है। तो इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं। वो भी समझ गए कि उन्होंने गलती से इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना, मगर बंद करने के बजाय अब वो 22 से 24 के बजाय 21, 20 कहीं तो कुछ मिले ढूंढने लग गए। फिर हमारे जो छोटे बच्चों का विद्यालय है वहां चले गए, उससे मांगने लगे। ठीक है, मांगिए, आपको जो मिले ले लीजिए, मगर मैं ये कहता हूं कि आपको ये मिलेगा कि यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जहां के संस्थापक खुद अपनी जेब से विद्यालय को 1-1 करोड़ साल का देते हैं। अब उसका क्या इनाम देंगे वो, ये मैं नहीं पूछना चाहूंगा। इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं देता है, टैक्स माफ है यहाँ, फिर भी एक आदमी देता है, वो मैं हूं, क्योंकि मैं अपना दायित्व समझता हूं और मैं दे सकता हूं, तो बिना जरूरत के टैक्स देता हूं। कितने लोग हैं भारत में जो बिना मांगे टैक्स देते हो? उस पर इनकम टैक्स के समन्स मानो ये कह रहे हैं कि आपने क्यों टैक्स दिया। तो ये विच हंटिंग का एक, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, एक कड़ी सा चला, जिसका आखिरी कड़ी था कल जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पे डाला। मुझे वैसे भी ऐसे खबरें आती गई बहुत अच्छे सूत्रों से कि आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस बनाया जा रहा है ताकि आपको। The Karnataka High Court on Thursday refused to interfere with the socio-economic survey conducted by the state government. However, the court has asked authorities to issue a notification that participation is voluntary and not to disclose any data obtained from participants. Senior advocate Vivek Reddy said the division of caste by the state government was not correct and the entire exercise is flawed because there is no proper head caste and subcaste. He further said during survey of this comprehensive nature, it should be scientific and clear. But the government has included various other groups that were not included in the survey, he added. First of all, the division of caste is not correct by the state government. I think the whole exercise is flawed because there is no proper division of a head caste and subcaste. When we are undergoing a survey of this comprehensive nature covering the entire state population, it should be very scientific and clear, and it should have a basis. Unfortunately, we are saddened that this sort of a division is not there, and they have brought in various other groups into the survey, like Wakaliga Christian, Brahmin Christian. Such groups never existed. Therefore, we believe that this is all an artificial, this is all the creation of these artificial castes in order to manipulate the survey and to take it in a wrong direction. So this is our main concern, and we addressed all this before the court. The court finally has said that there was a second concern regarding data storage, because under Aadhaar regime there is a very comprehensive architecture for data protection. But unfortunately we are now out of the Aadhaar regime, where state government is collecting data more than Aadhaar, the livelihood, occupation and the property details of individuals throughout the state. So when they undertake such a comprehensive exercise beyond the Aadhaar, out of the Aadhaar framework, we asked what is the framework that is there in order to protect this vital data, this important data of citizens of Karnataka. And unfortunately the state did not have an answer. Therefore the court has issued directions to protect the data, and has said that data under all circumstances must be kept confidential and under the custody of the State Backward Class Commission. So at least this direction has helped to safeguard the data. Yes. Yes, because in this modern era, no entity undertakes an exercise with 60 questions asking citizens.
So there are a lot of privacy concerns regarding the material and the information given. And this could be manipulated and misused. So this metadata, because there is no Data Protection Act. An act was there in 2023, but it has not come into force. And how does the state control this metadata? It could fall into wrong hands, and the processors who are there in between could misutilize it. So all these issues were brought out before the court. Putswamy 2 judgment, which was under the Aadhaar framework, where some provision were declared as unconstitutional, even those were referred, and the court felt that this is getting out of the data control mechanism, and therefore has given directions, about 2 or 3 directions to protect the data. Survey will continue, sir. What is your next? Your survey has been made voluntary because it cannot be forced upon any person. There is no, under the Census Act it is mandatory, but they are not conducting it under the Census Act. It's a socio-economic survey, so it has been made voluntary. If citizens want to give the information, they can give it. So at least this much is certain: this survey will not give a picture of the population of the castes. We were also concerned about this very important issue because society should not be divided on the basis of caste. It is very essential that the secular polity is maintained, secular nature of the society, fabric is maintained. If one gets a... HAL Chairman and Managing Director Dr. D.K. Sunil has said that there has been no discussions about the French engine as far as LCA Mk2 is concerned, and Indus is indigenously designed and developed advanced fighter aircraft is designed around the GE 414 engine. Rebuting media reports of India considering French fighter engines, D.K. Sunil said negotiations are at an advanced stage with American multinational conglomerate General Electric. He also stated that concerns over tariffs imposed by the United States on Indian goods do not affect discussions with GE concerning the fighter jet engine. It's a red letter day for us. This follow-on order of 97 LCA Tejas Mark 1 Alpha. This is a follow-on order with the fighters and trainers, and the significant part is that there will be 70% indigenous content in this. Compared to the earlier one, the indigenous content is much more. So we will be integrating the indigenous radar, indigenous EW suite and many other equipment. So this allows us to continue our supply chain. So we have already concluded the follow-on order of 113 engines with General Electric, and now we will be signing the contract with them. So this is a very good vote of confidence by the Government of India in the work HAL is doing and in the indigenous content that we are building and with the ecosystem that we are building and working. So it is an excellent example of how the government is walking the talk of Atmanirbharta and giving orders so that this will generate jobs downstream, not only in HAL but downstream in all our ecosystem, and the technologies are being made by all these companies. So it is a very big boost for Atmanirbharta. So you see, in this aircraft roughly 50% is the material content, 50 to 55%. There's a huge amount of material, and these materials, when we say, it could be equipment, it could be metal, it could be any spare part, whatever we build, they are all going to come either mostly from the Indian private sector, and some things we will manufacture, but most of it will come from the Indian private sector. So you can see that out of this huge number, 62,000 odd crores, a lot of it is going to go into the indigenous supply chain. So that will have this downstream effect of creating jobs. For example, even we are indigenizing a lot of materials. We are working with Bidhani for indigenizing some of the materials. We are working with Yantra India for some aluminum extrusions. Recently we have partnered with them. So we are trying to build those supply chains to reach the 70%. So obviously when these new radar which is there, the indigenous radar, Uttam, that is going to come, or the Swayam Rakshak Kavach, these are going to be made in India. So obviously there will be a spin-off in terms of all these companies which are going to make this, will generate lots of jobs. So it is going to be a very big benefit for the whole ecosystem.
Bharatiya Janata Party on Tuesday appointed senior party leaders for its poll preparations in Bihar and West Bengal, with Union Minister Dharmendra Pradhan named as the election in charge for Bihar and Union Minister Bhupendra Yadav tasked with the role for West Bengal. Alongside Pradhan, BJP leader C.R. Patel, who is the party's Gujarat unit chief, and Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya have been named co-in-charges for Bihar. Former Tripura Chief Minister and currently MP from Tripura West, Biplab Kumar Deb, has been named co-in-charge to manage party affairs in West Bengal. The leadership move comes as the state heads towards crucial assembly elections next year. The Bihar elections are expected to be held later this year in October or November. However, the Election Commission of India has not yet announced an official date. राजनीतिक रूप से लिया गया निर्णय है वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की दूरदृष्टि को नहीं समझ सकते। ये विगत 10 वर्षों में लिए गए उत्तरोत्तर लिए गए आर्थिक निर्णयों की श्रृंखला की एक कड़ी है। सबसे पहले जनधन योजना आई, यानी बैंक खाते खुलवाए गए। आज 56 करोड़ बैंक अकाउंट हैं। दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड। निवेदन समाप्त करता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, जरा याद करिए, जब संसद भवन में फ्लोर द हाउस अनुराग ठाकुर जी ने बगैर नाम लिए बोला था कि जाति गणना की बात सबसे ज्यादा वो नेता करता है जिसकी खुद की जात का पता नहीं। तो अखिलेश जी बड़े आक्रोश में खड़े होकर लोकसभा के पटल पे बोले थे कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। याद करिए वो वीडियो, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, वो सच था या ये सच है? यानी तब तो आप कह रहे हैं जात कैसे पूछ सकते हैं, हाँ जात पूछ सकते हैं, या उस समय भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और था, और आज भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भली बात समझती है। दूसरा बिंदु, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कह रहे हैं, तो उन्हीं के राज्य में कर्नाटक में मुस्लिम समाज को आरक्षण देकर SC ST OBC का आरक्षण समाप्त करने की पूरी व्यवस्था कांग्रेस निरंतर कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में पिछले दरवाजे से भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग ने उन राज्यों से जवाब तलब किया। पश्चिम बंगाल ने करीब 141 मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में डाल दिया। पूछा गया पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कि ऐसा कैसे हो गया, कहते साहब वो कन्वर्ट होने से पहले वो थे इसलिए मान लिया जाए। और मजे की बात है, हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम समाज में दिखा दी हैं। और मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, आपने तो मिला था पर स्वतंत्र तो उसमें नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद पहले सांस्कृतिक दृष्टि से स्व का तत्व आया, अब आर्थिक दृष्टि से उस स्व के तत्व को स्थापित किया है। यदि 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन के लिए था, तो 21st सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी अभियान के द्वारा भारत के जन जन को सशक्त करने का एक आधार बने। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि ये GST 2 भारत के हर सामान्य और गरीब व्यक्ति के हाथ में वह क्रय शक्ति देगा। वैसे भी जब हम आए थे तो 74,000 रुपए की भारत की प्रति व्यक्ति आय, जो 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गई है, वो शक्ति देगा। और भारत की इंडस्ट्री से लेके, भारत के किसानों से लेके, भारत के मजदूरों से लेके, भारत के रोजमर्रा में काम करने वाले मिडिल क्लास तक सबको जीवन के हर क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण का जो ये महाअभियान है, इसके चलते हुए आज ये स्थिति है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के तीसरे बड़े देश हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हैंडसेट में हम दुनिया के दूसरे नंबर के देश हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 के देश हैं। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो। और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में हम किस सीमा तक पहुंचे हैं कि आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री जी ने आज ही मोरक्को में टाटा डिफेंस की पहली भारत की ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। यानी भारत की कोई कंपनी दूसरे देश में जाके रक्षा उत्पाद बना रही है। इसलिए मैं ये कहते हुए कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं, जो इल्जाम देने की हरकत और हिमाकत से बाज नहीं आते हैं,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के जिन नए सोपानों की तरफ विगत एक दशक से लगातार बढ़ रहा है, उसी श्रृंखला में एक युगांतकारी परिवर्तन 2 दिन पहले से लागू अनिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भारी परिवर्तन करके हुआ है, जिसे हम सब जीएसटी के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक श्रृंखला है और उसी व्यवस्था और कार्यक्रम के तहत मैं आज यहां आपके समक्ष उपस्थित। देखिए, ये जो जीएसटी में बदलाव आया है, ये एक बड़ा व्यापक बदलाव है, जिससे एक आम आदमी के लिए, विशेषकर मध्य वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग के लिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, जब हम किसी देश की तुलना करते हैं तो उसके लिए पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट होता है। जैसे आपने पानी की बॉटल देखी होगी, यहाँ कितने की मिलती है? 10 रुपए की। अमेरिका अगर आप कहीं गए हो, आपने खरीदा हो तो कितने की मिलती है? $1.5 की। $1.5 के हिसाब से यहाँ कितना हुआ? 150 रुपए। 150 रुपए की मिलती है नहीं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी को देखें तो हम नंबर 2 के लगभग की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब आप किसी की ये पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, उसके अनुसार देखते नहीं करता है, उस पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे जीवन की मूल आवश्यकता हो अथवा गतिविधियों की जरूरत हो, कि बाहर जाना हो, कामकाज के लिए जाना हो, उस सब में ये भारी सुधार का जो काम किया है, इसने आम जनता के हाथ में खर्च करने की ताकत बढ़ाई। मैंने आपसे अभी कहा कि जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मत से लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था बहुत अनुकूल नहीं होगी कि बहुमत के आधार के ऊपर अगर बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए, भाजपा एनडीए शासित राज्य अधिक होंगे, परंतु हम सर्वसम्मति बनाकर, मगर जो हमसे सवाल पूछते हैं वो तो अपने यूपीए में सम्मति नहीं बना पाए थे। पूछिए, जीएसटी लाने के लिए 2010 में जीएसटी आया था, ममता बनर्जी तैयार थी क्या? डीएमके तैयार था क्या? लेफ्ट तैयार था क्या? तो जो अपने गठबंधन में नहीं बना पाए सहमति, मगर हमने सब में सहमति बनाई और आगे की चीजें भी सहमति के साथ आई। मुझे लगता है वो क्या टाइम लैग में सोचते हैं। भाई 240 वाली कहानी 1.5-1.25 साल पुरानी हो गई, वो आज उनको याद आई। वैसे तो वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, उन्हें याद करना चाहिए। उसके बाद तो हरियाणा हुआ, उसके बाद Congress Legislative Party leader Deba Brother Saike on Thursday demanded a judicial probe into the untimely death of Assam's cultural icon Zubin Garg in Singapore, urging the President of India to intervene. Speaking to the media in Guwahati, Saike said he was raising the matter not as a political leader but as an Assamese citizen concerned about the state's cultural identity. He sought an inquiry under the supervision of a sitting or retired High Court judge, with the CBI guiding the state CID instead of relying solely on the special investigation team formed by the Assam government. Saike referred to a past remark by CM Himanta Biswa Sarma made 6 years ago, suggesting that Zubin's life could be endangered by people close to him. He questioned why, despite such concerns, the government failed to provide adequate protection to the artist. The CLP leader also recalled how the government once arranged medical assistance for another artist, arguing that similar steps should have been taken to safeguard Zubin given his health condition and cultural importance. I am now talking not as a political leader of any political party, as a common person of Assam, an Assamese person. I am demanding the President of India to hold a inquiry regarding the circumstances leading to untimely death of our icon Zubin Garg in Singapore. This should be done under judicial supervision of a sitting or retired High Court judge, with CBI guiding the state CID, as our Chief Minister has already constituted an SIT. But I believe, though I have regards for Assam Police, they are not capable enough to do
the investigation the way CBI will be able to do in such circumstances when something has happened outside our territory in a foreign country. Also, I have come across a TV bite where 6 years ago the Chief Minister predicted that Zubin Garg may get harmed by some of his friends who are close to him, and his life may be endangered. If such was the case, my question is why the Assam government did not give him enough protection. Also, we know the Assam government once helped our artist Zubin Garg by providing an air ambulance to take him from Dibrugarh due to his medical condition. And the doctors in Guwahati advised that Zubin Garg should not be allowed to go near fire or near water due to his medical condition. Why did not Assam government form a team also then to keep him safe, as his presence was very much necessary to preserve the identity, to protect our culture. He was so versatile. Youths got inspired to love their own culture in spite of pressure from foreign culture. His devotional songs were so popular, and his songs were for all seasons, all regions, and the way he represented our culture, we needed him when our culture is endangered, it is threatened by foreign elements. So his presence was very much needed, and there is also now threat. His wife is also abused by some people. I asked the government to take strict action against those SARS people who make bad comments about his family also. Then the government should recognize artists like Zubin Garg, who are soft target for conspiracies precisely because of their mass following, political neutrality and cultural influence. And this is not just an issue of Zubin's individual safety, it is about protecting Assam's cultural pride. If someone of his stature can be left vulnerable, ordinary artists and citizens are at even greater risk. The CM should assure people that all angles, from personal enmity, professional rivalry, for organized attempts at defaming or harming Zubin will be brought under the ambit of the investigation. And government should think about creating a dedicated mechanism to protect Assam's cultural icons. And also I think the government should help in completing the ongoing film project, which was very close to Zubin Garg, Roi Roi Binai, by assisting him. And also now there is news that his intellectual property right, his royalty, all are treated. The government should help legally in administrative way, so that the heritage, the authority, the ownership of Zubin's creation remain not with any businessman. As of now, keep watching Hornbill TV.